Very good morning students and most welcome again in online classes. As you know that we were having a short composition in English language, in the syllabus. Okay, in last class we did the last question of declining in short composition, invitation reply. So students, as you can see that we were having invitation reply in the series of short composition. You can see here short composition, invitation reply. Right now I am having the next question of declining in invitation reply. Short composition, the topic is short composition, invitation reply, formal reply, declining. As you know that invitation replies are of two kinds, formal and informal. In formal we have two sections, accepting and declining, or in informal we also have two sections, the same section like formal one, accepting and declining. Formal में दो section है, we are having replies now. Okay, the very first two questions of cards were about cards, invitation were about cards, and right now we are having the series of invitation replies students. Okay, the formal invitation replies. Okay, formal replies हमारे accepting के question हो चुके हैं. We did all the three questions of accepting in formal reply, and right now I'm having the question number second of formal reply declining. मना करना reason के साथ में, you know that I have touched the line in last class in question number first of declining. So formal reply declining students, question number second right now I'm having in front of you. Okay, question number second. So question number first was a birthday party, decline करना था उसको, reason बताया हमने mother hospitalization का. Okay, I'll give you 2 to 3 reason. I'll provide you 2 से 3 reason मैं आपको दूंगा. Just click on single one and have your answer students. Okay, very easy one to score 4 marks in board examination with the help of this question students. Okay, question number second, you have been invited by Mr. Akash. Okay, question पे focus करो, वो important यहाँ पर है. We are having formal reply declining. We are having formal reply declining students. Okay. Question number second is you have been invited by Mr. Akash कि आपको invitation मिला किसके द्वारा? Mr. Akash के द्वारा. You have been invited. The given example is passive voice hasn't have plus been plus third form. Passive voice में है by Mr. Akash कि आपको invitation मिला है या invite किया गया है Mr. Akash के द्वारा. Mr. Akash Singh के द्वारा, the name Mr. Akash Singh to attend a seminar, एक seminar attend करने के लिए, एक seminar को attend करने के लिए on clean India, green India. The name of the topic for the seminar is clean India, green India. What's the name of the topic or title of the seminar? It's a clean India or green India. मतलब स्वच्छ भारत और हरित भारत. Okay, there is a XII campaign by the central government. You know, the same was launched by the central government about clean India, स्वच्छ भारत के बारे में. And I have add the one more one green India. Okay, clean India, green India एक टॉपिक है, सेमिनार का होगा सेमिनार, उसके लिए आपको इन्विटेशन मिला कि इसके द्वारा by Mr. Akash Singh के द्वारा. Draft a formal invitation reply. You need to write a formal invitation reply. We are having replies students, so we are talking about replies here. The question is about informal. सबसे पहला काम जो क्लिक करना है बोर्ड एग्जाम में, क्लिक करना है फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, तो ये तो फॉर्मल है. ओके, बोर्ड एग्जामिनेशन में द मेन्स ऑफ इन बोर्ड एग्जामिनेशन रिगार्ड्स टू दिस क्वेश्चन फॉलो फ्यू वेज. जस्ट क्लिक ऑन द वर्ड इट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल. द वर्ड इज फॉर्मल वी हैव हियर, इन्विटेशन तो है हमारे पास, रिप्लाई हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है. इन declining, the word is declining, not accepting, because the very first 3 questions of the same section of short composition were about to accepting students, वो accepting के बारे में थे. And now right now we are having in declining वाला क्वेश्चन करना है, हमें decline करना है invitation को. Is it clear? It means that आपको invitation मिला है सेमिनार में आने का मिस्टर आकाश सिंह के द्वारा, आपको उसे decline करना है फॉर्मल तरीके से. So let's have the answer students. Okay, without wasting your time. You. Okay, सिंगल यहाँ पे सिंगल पर्सन लेके चलेंगे हम लोग. Okay. Mr. Rohit Bhati thanks Mr. Akash Singh for his kind invitation to attend a seminar
on clean India, green India, हरित भारत, स्वच्छ भारत, हरित भारत, हरा भरा भारत. Okay, which is, yeah, that is, which is going to be held on November 15, 20 cross, okay, and you will mention 2021. जब बोर्ड एग्जामिनेशन आपके होंगे 2021 मेंशन कर देना, डेट अपने एग्जाम के आसपास से डाल देना, यू विल गेट फुल मार्क्स. ओके, at about 10 a.m. in Maharani College, Jaipur. In Maharani College, Jaipur. Don't mention he has great pleasure in accepting the invitation, the same line that I have mentioned very first question, because those questions were about your accepting the invitation formally. Okay, right now having the word declining, so you cannot accept the invitation, you will decline the invitation, मना करने पड़ेगा, but formal language with third person. Okay, with third person. It is regret to inform that due to prior engagement का मतलब होता है व्यस्तम कार्य. He expresses his inability to show his presence there. Okay, from here he stand for the subject, wishes for the success, space is not enough here, I have mentioned for the success of seminar. One line space, students. Okay, next C21. Janakpuri, Jaipur. The seminar will be held on 15th of November. Mention November 9, 20 cross. And close your answer with the help of scale, not with the help of your hand. Okay, मेरे पास मैं scale यूज नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर, with the help of scale only. Okay, थोड़ा सेंटर में प्रॉपर तरीके से करना है, थोड़ा बैलेंस करके ताकि अच्छा लगे. It will become a matter of your presentation also. Straight line. So let's have the translation of the given answer, students. Okay, one by one. Okay, let's have it now. The question was about basically that you have been invited to attend a seminar on clean India and green India. So let's have the answer. Subject is Mr. Rohit Bhati. Mr. Rohit Bhati
thanks because subject is singular, so that's why the verb will be singular. So instead of using thank, you will mention as to make your verb singular. Okay, Mr. Rohit Bhati, singular subject, singular verb, subject verb agreement. A rule of subject verb agreement, the verb should be used as per the number of subject. Okay, Mr. Rohit Bhati, singular subject. Mr. Rohit Bhati thanks Mr. Akash Singh. Mr. Rohit Bhati Mr. Akash Singh को धन्यवाद देते हैं as in the question. Okay, for his kind invitation, singular subject है, that's why I use singular. Singular subject है Mr. Akash Singh भी, तो I have used his here for his kind invitation to attend a seminar. कि मिस्टर रोहित भाटी जो है मिस्टर आकाश सिंह को धन्यवाद देते हैं उनके सौहार्द भरे निमंत्रण के लिए। किस चीज़ का है वो? टू अटेंड ए सेमिनार, एक सेमिनार अटेंड करने का ऑन क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, स्वच्छ भारत और हरित भारत पर है। विच इज़ या फिर दैट इज़, विच इज़ और दैट इज़, यू कैन यूज़ और दैट इज़, विच इज़ और दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड, जो होने जा रहा है, गोइंग टू बी हेल्ड, जो होने जा रहा है, और नवंबर 15 20 नवंबर 15 20 को एट अबाउट 10 AM, कितने बजे मॉर्निंग में? लगभग 10 बजे, इन महारानी कॉलेज। कहाँ पर? महारानी कॉलेज। ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। इट बेसिकली स्टैंड फॉर थर्ड पर्सन, यहाँ पे थर्ड पर्सन है। इट इज़ रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट, इट इज़ रिग्रेट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इज नोन एज इन्फिनिटिव। इट इज़ रिग्रेट टू इन्फॉर्म्ड नहीं आएगा बिकॉज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इज नोन एज इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव इज नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, इट इज़ रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट, ये बताते हुए दुख होता है। इन्फॉर्म मीन्स सूचना करना, रिग्रेट मीन्स खेद या दुख होना। इट इज़ रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट, इट इज़ रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट, कि पहले से ही प्रायर एंगेजमेंट होने की वजह से। द मीनिंग ऑफ प्रायर एंगेजमेंट का मतलब होता है पहले से ही, पूर्व से ही व्यस्तम कार्यक्रम है। एंगेजमेंट का मतलब होता है व्यस्त होना। सो इट इज़ रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट, ये बताते हुए दुख होता है ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट, की प्रायर एंगेजमेंट की वजह से he stand for Mr. Rohit Bhati. Already I mentioned it that the former replies will proceed, or the former invitation will proceed with the third person. He expresses, singular subject, singular verb, he expresses his inability, वह अपनी अक्षमता जाहिर करते हैं। Due to prior engagement, it is regret to inform that, कि बताते हुए खेद होता है, दुख होता है कि ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट, की पहले से ही व्यस्तम कार्यक्रम होने की वजह से ही एक्सप्रेस हिज इनएबिलिटी टू शो हिज प्रेजेंस देयर, कि वहाँ पर अपनी प्रेजेंस शो करने में वे अपनी इनएबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं। मतलब मैं नहीं आ पाऊँगा, हालांकि होना ये चाहिए आई एक्सप्रेस माई एबिलिटी टू कम देयर, आई एक्सप्रेस माई एबिलिटी टू शो माई प्रेजेंस देयर, आना चाहिए आई, लेकिन ग्रामेटिकल नॉर्म्स है दैट फॉर्मर रिप्लाइज विल प्रोसीड विद द थर्ड पर्सन। ओके, तो ही एक्सप्रेसेस इनएबिलिटी टू शो हिज प्रेजेंस देयर, वे वहाँ पर आने के लिए अपनी इनएबिलिटी, अपनी प्रेजेंस की जो इनएबिलिटी उसको शो करते हैं, मतलब नहीं आ पाएंगे। फ्रॉम हेयर, और यहीं से ही विशेस फॉर द सक्सेस ऑफ द सेमिनार, वह सेमिनार के सफल होने की कामना करते हैं। मतलब मना भी कर दिया आपने और विश भी कर दिया, बट बिकॉज वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट, तो दैट्स व्हाई वी विल यूज सिंगुलर वर्ब हेयर। ओके, फ्रॉम हेयर, यहीं से कोमा, यहीं से फ्रॉम हेयर कोमा लगाना है। फ्रॉम हेयर ही विशेज फॉर द सक्सेस ऑफ द सेमिनार, जस्ट 4 to 5 लाइन स्टूडेंट्स यू हैव इन अबाउट 50 वर्ड्स एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, जस्ट अ मैटर ऑफ एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग विद अ bunch of some words, group of words. So students, let's start with the next question. It's about declining formal invitation reply. The question was of your seminar Clean India and Green India. So let's start the next question student without wasting your time. So let's get this question number 2. Question number 2 was there, question number 3. Now question number 3. You are Mr. and Mrs. Yogi, and you have been invited by Mr. and Mrs.
Mr. and Mrs. Mehta to take lunch on March 15, 20, cross. Write down or draft, write down, in short you can write down, write a formal reply in declining the invitation. Answer: the question is about lunch, to take lunch. The question is about to take lunch, students. So let's see the question first. Question number 3. You know that in a series of declining, students, you are Mr. and Mrs. Yogi. आपका नाम क्या है? Mr. and Mrs. आप Mr. and Mrs. Yogi हैं, आपकी wife के साथ यहाँ नाम mention किया है. You have to assume yourself with your wife essentially. Okay, if the same is given in question, it's a matter of basically invitations. It's not a matter of your age at all. So you are Mr. and Mrs. Yogi. आपका नाम क्या है? Mr. and Mrs. Yogi. आप Mr. and Mrs. Yogi हैं, and you have been invited by, आपको invitation मिला है, आपको invitation दिया गया, invite किया गया है by किसके द्वारा? by Mr. and Mrs. मेहता के द्वारा. किसके द्वारा? by Mr. and Mrs. मेहता के द्वारा to take lunch लेने के लिए. क्या लेने के लिए? lunch लेने के लिए. On March 15 को 20 cross I mentioned for the comfort level of your examination. Okay, March 15 इस डेट को लंच लेने के लिए इन्विटेशन मिला आप सभी को. सो राइट ए फॉर्मल रिप्लाई इन डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन. इन्विटेशन को डिक्लाइन करना है आपको. क्या करना है? डिक्लाइन करना है. जस्ट अ मैटर ऑफ लाइन्स. ओके, नोबडी विल गेट इमोशनल अबाउट कि लंच डिक्लाइन हो रहा है वगैरह वगैरह. बस लाइन करना है, मेंशन करनी है आपको, जस्ट टू स्कोर 4 marks in board examination. The question is about that you have been invited to take lunch on March 15, 20 cross. So you need to draft or need to write a formal invitation reply in declining the invitation. आपको invitation को decline करते हुए अपना आंसर यहाँ पर लिखना है students. Okay, let's say the answer. Subject is Mr. and Mrs. Yogi, and the object will be Mr. and Mrs. Mehta have mentioned here. Okay, students. So let's say your subject first. Mr. and Mrs. Yogi. Plural subject. Mr. and Mrs. Yogi thank. Plural subject, plural verb. Okay, plural subject and plural verb. Mr. and Mrs. Yogi thank Mr. and Mrs. Mehta for their kind invitation. To take lunch on. The date is given in question, student. To take lunch on March 15. Okay, at about 1 p.m. Okay, at their own residence. Okay, वो कहाँ पर है? It is situated at Vaishali Nagar. You can mention in Jaipur, or with the help of comma you can mention Jaipur.
here, and now it's a matter of declining. You cannot mention like that they have great pleasure in accepting the invitation. उन्हें बहुत ही खुशी हुई है accept करते हुए, खुशी तो है, वो तो होगा indirectly, problem ही नहीं है, but you have to decline the invitation because as per the demand of question, ये question की demand से यहाँ पर आपको decline करना है. Decline में very common lines we have, the two situation I have mentioned to all of you. The first one, the two reasons I have mentioned to all of you for the declining the invitation. The first one was about your mother's hospitalization, due to mother hospitalization, and the next second one, the question in second question number second, I have mentioned the reason for declining for all of you just to score good marks in board examination. It was about due to prior engagement, कि पहले से ही engagement होने की वजह से, कि पहले से ही व्यस्तम कार्यक्रम होने की वजह से. ओके, they or he expresses, they express their inability like that ऐसा कुछ लिखवाए थे मैंने वहाँ पे आप सभी को. And now we have one another reason, एक और रीज़न कराऊंगा आप सभी को यहाँ लिखवाने जा रहा हूँ मैं. But don't forget that you need to pick just one. जो आपको बेस्ट लगे वो एग्जाम में लिख देना, you will get full marks. Okay, I'm having different lines but just for your choices. आपके चॉइस के लिए मैं different lines यहाँ पे लिख रहा हूँ different reasons के साथ. Otherwise I can mention the same reason कि तीन रीज़न में तीन क्वेश्चन में सेम रीज़न डाल के यहाँ पे डिक्लाइन कर देता हूँ. डिफरेंट इश्यूज हमारे पास आई, द क्वेश्चन ऑफ रिंग सेरेमनी, लंच लाइक दैट वगैरह वगैरह, लेकिन मैं अलग लिखवा रहा हूँ आपको सो दैट यू कैन राइट द लाइन्स एज पर योर own choice. Okay, if you have your own reason to mention, but don't forget that. Okay, before writing the same in in your fair register, okay, you should consult about the same on my personal WhatsApp number. Okay, before writing the same in your fair register, students. Okay, so let's have the line of declining right now. Okay, Vaishali Nagar, Jaipur, or instead of it you can also mention they, because declining with third person, they regret, or it is regret, they regret. So I have mentioned date, time and venue. They regret to inform that due to their child's child's illness, they express the inability to come there at the scheduled time. They hope that they would come next time. Okay, thanks again. Okay, thank again because subject is plural. Think again for invitation. Thank again for the invitation. The word is not properly basically written here. Invitation. If I is there, then I have to remove the I from here. Essentially, if the space is not enough to write the single word, then you should just mention dash there. Even the same dash should be mentioned also here to complete the word. Invitation. They hope that they would come next time. Thank again for the invitation. Okay, a single line space, students. A single line space. Single line space here. Okay. Then mention B21. Shastri Nagar,
Jaipur. Date March 15. You mentioned March 10, 20 gross toss. Okay, and then just close your answer in a box with the help of scale only, and just do the same course of action after the completion of your question answer. अपने आंसर को पूरा करने के बाद ही आप ये काम करें, पहले बिल्कुल ना करें, अदरवाइज बॉक्स बन जाएगा और वो फिर वो अगर आपने पेन से बनाया है तो प्रॉब्लम हो जाएगी. पेंसिल इज़ नॉट अलाउड टू यूज इन बोर्ड एग्जामिनेशन. पेन से करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ब्लू पेन. तो बाद में करना, पहले मत करना. द सेम ओके, द एक्शन शुड बी डन जस्ट आफ्टर राइटिंग योर होल आंसर. So let's have the translation about the same question, students, without wasting your time. So as I told you that you are Mr. and Mrs. Yogi. आपका नाम Mr. and Mrs. Yogi है. आप Mr. and Mrs. Yogi है. अपनी वाइफ के साथ नाम एज्यूम किया मैंने आपका. And you have been invited by Mr. and Mrs. मेहता. और आपको Mr. and Mrs. मेहता के द्वारा इन्वाइट किया गया है. क्या किया? इन्वाइट किया गया है टू टेक लंच. क्या करने के लिए? लंच करने के लिए. कब है? ऑन March 15, 20 gross cost. March 15, 20 gross cost को राइट ए फॉर्मल रिप्लाई. एक फॉर्मल रिप्लाई करना था आपको डिक्लाइन करते हुए इन्विटेशन को. दैट वाज द क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स हैव आंसर. सब्जेक्ट इज मिस्टर एंड मिसेज योगी. सब्जेक्ट है मिस्टर एंड मिसेज योगी थैंक, धन्यवाद देते हैं किसको? मिस्टर एंड मिसेज मेहता को फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, उनके सौहार्द भरे निमंत्रण के लिए. टू टेक लंच, लंच है लेने हो तो. On March 15, 20 gross cost इस तारीख का इन्विटेशन मिला हुआ है एज पर द क्वेश्चन एट अबाउट 1 PM. कितने बजे? लगभग दिन में 1 बजे, दोपहर में 1 बजे. लंच कितने बजे होता है? 12:30, 12:15, 1 बजे के आसपास. बट डोंट फॉरगेट दैट इफ द डेट एंड टाइम इज नॉट, इफ द डेट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, द सेम शुड बी मेंशन और रिटन एज पर योर IQ लेवल, एज पर योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. ओके, एट देयर ऑन रेजिडेंस, उनके अपने निवास स्थान पर. वेन्यू क्या है? वेन्यू यू कैन मेंशन आल्सो लाइक इन होटल रॉयल्स मून, इन 5-star होटल लाइक सिचुएट इन 5-star होटल वैशाली नगर जयपुर, शास्त्री नगर जयपुर, ओके, विद्याधर नगर जयपुर. ऐसा लिख सकते हैं अपने हिसाब से वेन्यू. यू कैन चेंज योर वेन्यू एज पर आवर चॉइस, बट डोंट forget to consult the same, okay, on a personal WhatsApp number, students. Okay, just it's a matter of 2 or 3 lines. About 1 PM, इतने बजे का इन्विटेशन मिला हुआ आपको एट देयर ऑन रेजिडेंस, उनके निवास स्थान पर. वो कहाँ पर है? मेंशन करना पड़ेगा. रेजिडेंस वैशाली नगर जयपुर. इट्स अ वे टू राइट, इट्स अ वे टू रिप्लाई फॉर्मली ऑफ अ सर्टेन इन्विटेशन. ओके, यहाँ पर उनका निवास स्थान है वैशाली नगर जयपुर में. दे रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट दे, आई टोल्ड यू दैट यू कैन ऑल्सो मेंशन इट इज रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट, इट इज regret to inform that. Just to have the change in answer, you can also go through with a third person like that. They regret to inform that वे उन्हें जो है ये बताते हुए दुख होता है, खेद होता है. They regret to inform that उन्हें बताते हुए दुख होता है, खेद होता है. या फिर it is regret to inform that यह बताते हुए दुख होता है. They regret to inform that, they regret to inform you मत करना. Second person will not be used here. Maybe the sentence is grammatically correct, but the second person will not be used here. Even the first person will not use here because formal replies are not written in first and second person at all, students. Okay, so they regret to inform that. Either you can have the line like they regret to inform that, or you can have your answer like it is regret to inform that. उन्हें बताते हुए दुख होता है, या फिर यह बताते हुए दुख होता है. उन्हें इन्फॉर्म करते हुए खेद है, दुख होता है, या फिर इट इज़ रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट, या फिर यह बताते हुए दुख होता है क्या? दैट ड्यू टू देयर चाइल्ड इलनेस, कि उनके चाइल्ड के इलनेस की वजह से, बच्चे के बीमार होने की वजह से. ड्यू टू देयर चाइल्ड्स इलनेस, आई मेंशन अपोस्ट्रोफी चाइल्ड्स. ओके, पोजीशन शो करता है अपोस्ट्रोफी. ड्यू टू देयर चाइल्ड्स इलनेस, उनके बच्चे के बीमार होने की वजह से. दे एक्सप्रेस सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट देन प्लूरल वर्ब वी हैव. They express their inability to come there, वे वहाँ पर आने में अपनी inability express करते हैं. presence वाला वर्ड मैंने हटा दिया just to have some difference in answer. Okay, answer at the scheduled time. कहाँ पर? to come there. कहाँ पर? at the scheduled time पर. I repeat the line again. They express their inability, अपनी inability express करते हैं to come there, वहाँ पर आने में at the scheduled time, दिए गए सुनिश्चित समय पर. Okay, they hope that, वो आशा करते हैं कि that they would come next time, कि अगली बार वो आएंगे. They hope that they would come next time. If you don't love to use conjunction, तो conjunction हटा दो यहाँ से, comma लगा देना. Okay, अगर यहाँ से conjunction remove करना चाहो, you can remove it, but don't forget to mention the comma here, तो comma लगा देना, वो भी चल जाएगा. The same I have mentioned before in the previous 2 questions. They hope that, वो आशा करते हैं कि that कि they would come next time, कि वो next time आएंगे.
thank again for the invitation. Invitation के लिए फिर से एक बार धन्यवाद. But don't mention thanks because subject is plural we have here. Okay, plural subject, plural verb. So you should not mention thanks again. Otherwise, a matter of your score. Okay, thank again for the invitation. Okay, invitation के लिए फिर से धन्यवाद. One line space here students, one line space. Then B21 शास्त्री नगर जयपुर ये एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा. भले कुछ यहाँ बुक्स बताती नहीं बताती हैं, but when it becomes a matter of marriage anniversary, okay, ring ceremony, marriage, wedding like that, it becomes essential to write the address because lots of mehtas, lots of singhs, lots of yogis, lots of title can be possible in a certain or fixed areas, or the person or the receiver should know from where the replies has come. के reply आया कहाँ से, किस address से आया. That's why it's essential to write the address. Otherwise, the same would not be happen in informal reply at all, students. Okay, it's a matter of it's all about your declining. And right now, I have finished your section of formal declining. Formal invitation reply with declining is all about your invitation reply with declining. Okay, 3 questions were of your accepting, and these 3 questions speak about your declining. And after this one, we'll have the informal replies. Is it clear? Invitation reply का पहला section हमारा formal reply का खत्म हो चुका है with accepting, declining. Okay, I'll assign the next or some bunch of questions to you related to the same, okay, section like formal replies we have. Okay, formal replies आपका accepting, declining के साथ पूरा हो चुका है, and next we'll have informal replies with accepting and declining. Is it clear? The first half हमारा पूरा हो चुका है. It only 6 questions are there to complete the same topic of short composition, and just after this we'll have application for job letter writing, students. Okay, students, it's all about today. The next we'll have in the next class. Thank you and have a nice day.